Hello, everyone, and welcome back to the Cover Drive podcast. We are back again today with a bit of a different episode. As we all know, the Pakistan Shaheens, the A team, have been a bit more active over the last 6 months, I would say, maybe 4 months. There's been a couple of series coming through for them. There was a tour of Zimbabwe, facing what was essentially a Zimbabwe supposed to be an A side, but they did have a lot of their main players playing there, followed by the Emerging Asia Cup, which Pakistan won, as well as the top end T20 series in Australia that just concluded yesterday, based on my timings. I think it was today. Uh, it was yesterday, actually. Yeah, sorry. I have my time zones all mixed up. Um, so yeah, we're here to chat about those, see some of which of the players are gave performances worth looking into further, and potentially players who could figure into the national team in the long run. Uh, so without further ado, आज मेरे साथ दो guests हैं. We have Zaid Babar Khan, ex grassroots cricket, and we have current grassroots cricket, Abdullah Ansari. You'd know both of them. They're pretty active on Twitter, with all the stats, all the numbers. So yeah, I guess we'll start off from the Zimbabwe series. I'll start with Abdullah Bhai. Abdullah Bhai. So we had two unofficial tests, six ODIs. Uh, who were some of the standout performers? What do you think of the Shaheen's strategy at the moment or as a whole? Because we've been getting a lot more cricket of the A side that was missing in the last couple of years. First of all, thanks for having me on the podcast. The first thing is that I think when the rebranding of the A team was done and it was renamed to the Pakistan Shaheens, then I think it was Wasim Khan who did it, right? So उस वक्त काफी स्ट्रेस हुआ था कि they're going to be playing more going forward, लेकिन I maybe थोड़ा neglect हुआ और also COVID की वजह से I'm sure they would have faced some problems. So it never really got underway during their tenure, but in the past few months, we've had a couple of series, three series now, and it's really good that they're back in action. That's what the Shines should just be playing regularly. Like, we don't get enough top level cricket as it is. Basically non T20 cricket. We get T20 cricket of all types of during all times of the year, but we don't get enough of the other formats. So 50 over or 4 day jitna bhi shines ko khelne ko mile, it's great. So that, and from that perspective, I think it was really good that especially the Zimbabwe tour and the emerging Asia Cup, and then the top end T20 series was also good because thoda young players ko thoda exposure mila and of different conditions and all. So I think this general strategy, I'm really happy to see them back playing regularly, and I hope that that will continue more so in the future, and not like it happened last year when the Shines were touring during the Quaid-e-Azam Trophy. No, we don't want that. So that we want the players to be available for the Quaid-e-Azam Trophy and for other domestic tournaments. लेकिन बाद में जो भी पूरा साल आपका बचा हुआ है तो उसमें शाइन्स को जब टूर्स मिल सकते हैं तो देने चाहिए. So yeah, it's great to see that they're playing actively again. And I think game time has been something that's been really hard to come by for a lot of youngsters, right? Like, ये जैसा आपने कहा था कि I think we had the one Shine store of New Zealand back in the back end of 2020, and we had like two tests in Sri Lanka जिसमें से एक wash out हो गया था. So yeah, there's not been much, and I think Hassan Chima also stressed on this. He's one of the selectors at the moment, right? Like with the emerging Asia Cup, I have the numbers here right now. The average amount of list A games the squad had was 38. The only teams with lower than that were Afghanistan at 33 and India with 16. But obviously, India had sent a very inexperienced squad to that tournament, so that was to be expected. So, and our Pakistan Cup, जो हमारा ODI list A competition है, it's pretty much treated like an afterthought, season after season. There was one season where part of it, I think, even clashed with the PSL a little bit. Um,
and also the Australia series. So yeah, we really need to start beefing that up. And similar with the top end series, when we look at appearances, first class compared to the other teams that were there, PNG, Melbourne Stars, Melbourne Renegades, all these teams. Again, it was really low comparatively, right? Like overall जो आपके matches थे. So this is, I think, a very positive step, and hopefully, and as Abdullah bhai said, let's not have them clash with the domestic season because वैसे हमारा 4 महीने का season होता है. There's like a whole 8 other months where you can fill these series with where the cricketers are basically doing nothing. Um, but yeah, I'll hand it over to Zed. Zed, what have your thoughts been अभी जो recently खेल रहे हैं हम लोग Shaheens squad compositions जैसी रही हैं? Obviously, it's been a bit different for each series. Asia Cup और Zimbabwe का काफी similar था, but फिर ये top end के लिए ज्यादातर एक young squad था, which I liked because obviously Australia के conditions में खेलना it's a good challenge for these kids जो कि उनको grassroots level में पाकिस्तान की pitches we know how they are. It doesn't really test them. थैंक यू असद। हाँ, लाइक स्क्वाड की जो उनकी कॉम्पोजिशन थी वो जिम्बाब्वे टूर और इमर्जिंग एशिया कप की लाइक कुछ हद तक सेम थी, और वो काफी सिमिलैरिटीज नजर आ रही, लाइक मुबस्सिर हो गया, उमेर बिन यूसुफ हो गए, ऐसे कुछ प्लेयर्स जो दोनों में थे। उसके अलावा जो टॉप एंड T20 थी उसमें आई थिंक मोस्टली प्लेयर्स वो थे लाइक पीजीएल वाले थे, कुछ लाइक इरफान नियाजी या रोहेल नजीर, इस तरह के कुछ प्लेयर्स थे जो पीजीएल नहीं खेले तो ना, ज्यादा पीजीएल वाले प्लेयर्स थे। जो कि अच्छी जगह पीजीएल वैसे भी खत्म हो गई तो लाइक उनका कुछ थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट का लाइक जो शिफ्ट है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा आई गेस। बाकी अच्छी बात है वो क्रिकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि वही बात जो लास्ट 2 टूर हुए थे इस साल से पहले, वो कायदे ट्रॉफी के साथ क्लैश कर रहे थे, तो लाइक वो शाहीन के लिए भी कोई खास अच्छी चीज नहीं है। और आई थिंक जो नॉर्मल आके डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन था उसके साथ भी कोई अच्छी चीज नहीं है। प्लस उसके अलावा श्रीलंका में हुआ था वो आई थिंक कोई मानसून के दरमियान था लाइक शायद, क्योंकि एक भी आई थिंक कंप्लीटेड गेम नहीं थी कोई खास में। तो इसलिए ये है कि क्रिकेट इनके ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए ऑफ सीजन में खास तौर पे, और उसमें रेड बॉल पे खास तौर पे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट वगैरह बेहतर हो। हाँ नहीं, और जहाँ तक स्केजुलिंग की बात है विद कायदे आजम ट्रॉफी, एंड ऑब्वियसली इसके लिए हमें एक पूरी अलग एपिसोड करनी होगी बिकॉज ये बहुत एक लंबा टॉपिक है। बट अभी जो नया डोमेस्टिक, नॉट नया बट लाइक पुराना वाला वापस ला के नया बोलेंगे उसको, डोमेस्टिक सिस्टम जो आने वाला है, हम देख रहे थे कि जब भी कायदे आजम ट्रॉफी को जरा सा भी हिट लगता था, वेदर इट वाज क्लैशिंग विद द पाकिस्तान सीरीज जैसे इस बार होम सीजन में क्लैश हुआ था, फिर पिछली जो कभी अगर आपकी शाइन्स के साथ क्लैश हुआ, तो फौरन एक इतना डिक्लाइन आ जाता है टीम्स की क्वालिटीज में कि आई नो इनके प्लान्स है कि कोई पता नहीं 20-25 टीम्स जितने भी इनको करने हैं, आई डोंट नो हाउ दे आर गोना मैनेज दैट, बट हाँ, बट दैट्स फॉर अनदर टाइम। बट स्टार्टिंग ऑफ विद द जिम्बाब्वे सीरीज, उधर फर्स्ट क्लास में तो आपके 3 स्टैंड आउट परफॉर्मर्स थे, उमर बिन यूसुफ, मोहम्मद हुरैरा और मेहरान मुमताज. So how do you guys see both all three of them? Obviously, Herrera has already made it into the mix for the Pakistan squad, अभी जो recently Sri Lanka series थी, and we can imagine he'll debut maybe in the next 12 months because हम अभी साल बाद ही टेस्ट खेलेंगे. But so what do you guys think about Mehran Mumtaz? Is he someone जो नौमान अली को hopefully next season उसको replace कर देना चाहिए या कैसा देख रहे हो? I'll start with Zaid on this one. मेहरान मुमताज लाइक आई काइंड ऑफ लाइक हिम। मैंने उसको अंडर 19 में तो इतना को खास नहीं देखा था, लेकिन ये बेसिकली आया था आई थिंक 2020 के एंड पे, जब नॉर्दर्न ने जो है वो लाइक कुछ प्लेयर्स जो थे वो लाइक नीचे से काफी ऊपर आए थे। मुबस्सिर खान था उसमें, अब्दुल फसी था और मेहरान मुमताज से, इन तीनों का आई थिंक फर्स्ट क्लास डेब्यू हुए थे 2020 के सीजन के बिल्कुल एंड पर। तो तब मुझे याद है इसको मैंने देखा था, उसके कुछ अर्से बाद केपीएल में भी ये खेला था। तो आई रिमेम्बर मैंने अब्दुल्ला भाई से पूछा था उसको कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो ये कहते कि जी चलो इसकी फ्लाइट है एक तो, और उसके अलावा ये इमाद वसीम टाइप लाइक बॉलिंग करता है, बट ही एक्चुअली स्पिन्स द बॉल अनलाइक इमाद वसीम। तो वो उसकी काफी अच्छी चीजें हैं, प्लस की लाइक स्टम्प टू स्टम्प काफी होती है, तो आई थिंक वो टारगेट ज्यादा करती है। इसका आई थिंक रेड क्लास रेड क्रिकेट रेड रेड बॉल क्रिकेट का कोई खास एक्सपीरियंस तो नहीं था इसका, लेकिन जिम्बाब्वे में उसने अच्छा परफॉर्म किया आई थिंक।
15 विकेट्स 4 इनिंग में, और एक इनिंग में 11 विकेटें भी थी, तो एक काफी अच्छी चीज है। इवन दो जिम्बाब्वे की आई डोंट थिंक रेड बॉल क्रिकेट वाली जो टीम थी वो कोई बहुत एक्सपीरियंस थी, वाइट बॉल वाली में ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो मेहरान मुमताज का अच्छा, उसके अलावा बाकी भी हुरैरा, उमेर बिन यूसुफ की भी अच्छी फॉर्म थी। हुरैरा तो खास तौर पे रेड बॉल में ज्यादा था उसका, कायदे ट्रॉफी के लास्ट 2 सीजन हो गए, ये जिम्बाब्वे वाली सीरीज होगी, आई थिंक उसने 100 and 150 कुछ किया था एक इनिंग में, एक डेडी 100 जो होती है वो की थी। उसके अलावा उमेर बिन यूसुफ का भी आई थिंक वो है कि उसकी डोमेस्टिक फॉर्म आई डोंट थिंक बहुत अच्छी थी, बट रिसेंटली आई थिंक इसने वाइट बॉल में काफी इम्प्रूव किया था। उमेर बिन यूसुफ ने नेशनल ट्वेंटी कप का आई थिंक जीता था, उसके फाइनल में भी आई थिंक प्लेड अ गुड इनिंग्स। तो ये है कि उसने देख दोनों फॉर्मेट्स में अच्छा किया, वाइट बॉल और रेड बॉल में। तो ये अच्छा साइन है कि अक्रॉस फॉर्मेट्स को बेहतर कर रहा है। हाँ, और उमेर बिन यूसुफ की जहाँ तक बात है, मैं आई हैव टॉक टू अब्दुल्ला भाई अबाउट इट बिफोर एज वेल, बिकॉज आई रिमेम्बर अराउंड 2020 के आसपास काफी बातचीत थी कि ये ना डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए रेड बॉल क्रिकेट में फीचर करेगा। बट देन ही हैड 1 or 2 सीजन्स जहाँ पे थोड़ा hot and cold था वो, like he would get starts but not really convert them, and Abdullah bhai also, we talked about this, but I think it, इसने he was always seen as more of a red ball specialist, but over the last 12 months ये white ball में भी काफी performances दे रहा है। like अभी इसने जितने हमारे emerging Asia Cup हो गया, चाहे ये जिम्बाब्वे वाली सीरीज हो गई, उसने स्कोर्स किए हैं। And even for Quetta, he played like, I know he only played 2 games, which is not a huge sample size, but he had one pretty good knock in that. So Abdullah bhai, like, what do you think he's done differently? Like, because it's not very common कि हम ऐसा progression देखें एक youngster से कि कि often ये हो जाता है कि they get shoehorned into one format और वो उधर ही चलते रहते हैं। But यहाँ it's obviously we can see कि ये he's trying to branch out his game as much as he can. तीनों ये जो youngsters हैं, the ones that shown on the Zimbabwe, the first class tour of Zimbabwe, उसमें तीनों की काफी वेरिंग ट्रेजेक्टरीज हैं। लाइक हुरैरा के 2 फर्स्ट क्लास एक्सेप्शनल सीजन्स गए हैं, एंड he hasn't really faced any adversity in his career, not in I mean not in his first class career, not at the top level. Obviously struggles so sabki hoti hain to get to where they are, but he hasn't faced any challenges so far. He's mainly aced all the tests that have come in front of him. तो उसका तो कुछ काफी एक्सपेक्टेड था कि वो जिम्बाब्वे में जाके अच्छा करेगा, एंड वहाँ के लाइक जैद मेंशन, वो उनका वर्ल्ड कप वार्म अप बेसिकली चल रहा था उस वक्त, द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, इट वाज बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो उसकी वजह से उन्होंने इस पे ज्यादा इतना फोकस नहीं किया था रेड बॉल पे। दे हैड प्लेड क्वाइट अ लाइट स्क्वाड. So I think that for Herrera's performance like that just further confirmed his status as one of the कि जो रेड बॉल में टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो सबसे हाईली रेटेड है और नेक्स्ट इन लाइन है, तो वो ऑब्वियसली था। एंड आई थिंक दैट द इनिंग्स दैट ही प्लेड पहले पहले फर्स्ट 4 डे गेम में, आई थिंक पहली इनिंग्स में उसने बड़ी इनिंग खेली थी, तो उसकी वजह से आई गेस वो टेस्ट में भी सिलेक्ट हो गया आखिर। दूसरे जो दो हैं, I'll talk about Mehran first. Mehran has had an interesting career in that he's not really had that many opportunities at the first class level, especially कि वो थोड़ा डेवलप करे, जैसे उसने थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिखाया है। एंड द वन थिंग दैट वाज रियली इनकरेजिंग ऑन द जिम्बाब्वे टूर वाज कि उसने बहुत लंबी बॉलिंग की है। लाइक मुझे तो उसके लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि पहला जो 4 डे गेम हुआ था उसमें फॉलो ऑन उन्होंने एनफोर्स कर दिया था, तो he ended up bowling I think around 60 overs across both innings straight without any breaks or anything, and by the end of the game वो बेचारा खड़े होके भी बिल्कुल he was totally spent. But that's ऐसे ही तो spinners like बनते हैं, like with long bowling. I think I forget किसका इंटरव्यू मैंने अभी recently देखा था, same point was being made that you have to bowl a lot to become a top level spinner. So with Mehran, like he did really well in on that tour, but at the same time, like he does not have a lot of first class experience or exposure even.
तो आई होप कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 1,000 टीम्स होंगी, तो आई एम श्योर ही विल गेट अ स्पॉट ओवर देयर समवेयर, तो उसमें he'll have a chance to, I'm sure, bowl a lot of overs. So I hope he does well over there. I was a little bit surprised by his bowling because um, जैसे मैंने पहले उसको थोड़ा बहुत T20 में देखा था, तो I was really like pleased with his intelligence with the ball with bowling, because वो अपनी variations को अच्छी तरह से use कर रहा था, and he also had the brain to understand when like he should keep the batsman quiet, when he should attack them. And obviously 4 day में थोड़ा different skill set required होता है, तो उसने वो बहुत अच्छी तरह से demonstrate किया. Now the last one being Umair. उमेर का थोड़ा मिसकंसेप्शन है, ऑब्वियसली कुछ जर्नलिस्ट और मीडिया की तरफ से वो जो हाइप बनी होती है कि इसने बहुत रन्स कर दिए हैं, इसने अभी तक पाकिस्तान के लिए डेब्यूट क्यों नहीं किया, एंड ऑल दिस स्टार्टेड आफ्टर द शाहीन्स टूर. बट लेट्स बी रियल, लाइक बिफोर द शाहीन्स टूर he was not really in the frame for top level selection, क्योंकि उसके जैसे we discussed earlier कि उसका स्टार्ट अच्छा गया था, बट देन ही हैड like he's also been up and down in terms of like they're not sure कि किस तरह का बैट्समैन है वो. हिज डोमेस्टिक टीम्स, पहले वो डेब्यू किया था जब उसने आई थिंक पहला सीजन खेला था, वो ओपनर के तौर पे खेला था, फिर वो नीचे 4 पे आ गया, फिर 3 पे चला गया, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस. एंड उसकी अभी तक यही ट्रेजेक्टरी रही है कि ही आइदर he either doesn't score much or he makes big runs. So that's a good trait to have in my view, that when he gets starts, he makes them count, but he probably needs to get starts more often. And वो early dismissals पे काफी susceptible होता है. But he's come a long way in that दोनों जो पहले शाइन्स के टूर्स हुए थे, जिम्बाब्वे वाला and emerging वाला, like you could really see he's developed as a player. Uska spin game काफी बेहतर लग रहा था. He was playing spin really well, which hasn't perhaps been one of his strengths. He's always been a strong back foot player, but the rest of the other aspects of his game were yet to be tested. तो उसने वो काफी develop किया है, and उसका temperament especially I think काफी impressive था. I think एक मैच में उसने शाइन्स के लिए 150 किया था शायद, and that was against the Zimbabwe. One day games were played like against almost a full strength Zimbabwe attack, so that was an impressive knock. और फिर emerging cup में I think semi final में, if I remember correctly, उसने अच्छी इनिंग खेली थी. तो he's come a long way, and I think he should, as long as he keeps up this upward trajectory. but वही बात है कि उसके स्किल सेट के बैट्समैन कम है कि जो बैकफुट पे अच्छे खेलते हैं, तो he will always like be in the picture. It's just a matter of him, I think, having a bit of more consistency, and I think he will be around the Pakistan team soon. अच्छा, मतलब एक और बैकफुट बात है, एक एक और बात है. Besides the performers on the Shaheens tours, I think that one thing that stood out was the ones who didn't perform. um, Kamran Ghulam, I think, would be pretty disappointed with how both the tours went. कि वो अभी 1-2 साल पहले नेशनल टीम के साथ था, and he was on the verge of debuting, और अब डेब्यू कर भी गया as a concussion substitute, I think, in that game. But he had a couple of disappointing tours. He wasn't really able to make big scores. ठीक है, वनडे में उसको नीचे खिला दिया थोड़ा 4-5 पे, but like that's where he had chances, and he really needed to make them count better, especially जो दो first class games हुए थे Zimbabwe में. I think that those have pretty much removed him from test contention for now. It's a harsh reality कि एक दो matches पे हो सकता है, but like there is tough competition in that sense. So I think that was those two tours were both a little disappointing for Kamran Ghuram. हाँ, और कामरान गुलाम का मैं I was gonna bring that up because obviously 2 3 years I would say as early as जो हम लोग की साउथ अफ्रीका सीरीज थी 2021 की, वो जो उस साल जो कायदे आजम ट्रॉफी का सीजन हुआ था where he had a very exceptional season. उसके बाद काफी लोग का ये कहना था कि he might be your eventual अजहर अली successor at 3.
lots of people even said, okay, he has more of the tools to make it in Test cricket than South Shakil. But now, fast forward, and South Shakil is perhaps having one of the best starts anyone could ask for in Test cricket. And Kamran Ghulam, unfortunately, out of the mix, I would agree, because अब अगर देखा जाए तो for once in our history, we have an overflow of top order bats who are especially young ones जो अगले 3-4 साल में अपनी जगह के लिए proper fight कर रहे होंगे. A lot of them we haven't even seen them in much action yet. But जहाँ तक Umair, coming back to Umair, uh, you spoke about his back foot game, and I think that's very important considering कि हमारे पास इस साल दो ऐसी सीरीज हैं इस WTC साइकिल में. वन इन ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, जहाँ हमारी historically speaking we all know how we fare over there, and the second's in South Africa. Now I would say कि the Australia series is perhaps cutting it too soon for Umair, obviously, because हम लोग खेलते ही टेस्ट इतना. एंड आपने ये भी कहा था ना, ही हैज दिस टेंडेंसी कि वो जब स्कोर करता है तो बहुत बड़ा करता है, लेकिन he has like those small scores. I would say that if he was born in an England or in Australia जहाँ वो लोग हर साल कोई 20-25 टेस्ट मैच खेलते हैं ना, he would actually have that kind of run. But यहाँ तो हम लोग साल में मुश्किल से 4 टेस्ट खेलते हैं, तो it's so hard on a player कि वो कैसे अपनी जगह बना सके टीम में, right? But do you guys think कि Umair, by the time that South Africa series, the tour rolls around, he could be in contention potentially in that top three? Obviously, Herrera की अभी debut करना रहता है, but maybe in place of maybe an Imam uh, on that kind of a series, because obviously playing the short stuff isn't really his forte, as we all know. But yeah, what do you guys think about that? Um, Abdullah भाई, आप पहले बोल दो. ठीक, आई थिंक इट्स अ बिट टू सून टू से. रियली डिपेंड्स के टॉप ऑर्डर का क्या सिचुएशन हो. लेट्स जस्ट से कि ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हाल हो टॉप ऑर्डर का, उसके बाद देखना पड़ेगा. हो सकता है कि कुछ लोग हों जो थोड़े टाइट रोप पे हों उस वक्त तक, तो देन देयर माइट बी एन ओपनिंग. बट ऑब्वियसली आई थिंक हुरैरा का पहला चांस बनेगा बिकॉज ही इज बीन इन द स्क्वाड फर्स्ट. So if you have if you have double like openings and two certain people walking on tight ropes, then maybe he can come into contention. But I think it's just important for him कि अभी इस कायदे-आज़म ट्रॉफी में अच्छा करे, and he has a really good season to back up his Shaheen's performances, so that he puts pressure on everyone जो ऊपर उसके टॉप ऑर्डर कंटेंडर्स जो अभी हैं मेन टीम के लिए. दे शुड बी अवेयर कि एक बंदा है जो आ रहा है. उमेर का टेस्ट में आना, आई थिंक लाइक साउथ अफ्रीका तक कोई बहुत टाइम अभी देख रहा था, तो लाइक इट साउथ अफ्रीका सीरीज का शेड्यूल है 24 दिसंबर, बेसिकली अ ईयर आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज. तो आई थिंक तब तक लाइक इमाम के अलावा शान मसूद आई गैस जगह जरा हो सकता है ना हो इस टीम में. तो आई थिंक अगर वो कंसिस्टेंट रहा थोड़ा डोमेस्टिक गेम में, तो उसका और हुरैरा का लाइक काफी हो सकता है कि वो अब्दुल्ला हुरैरा ये टीम में काफी यंग टॉप ऑर्डर हो पाकिस्तान का. फॉर श्योर. ऑब्वियसली हमने बैटर्स की तो बात कर ही ली, एंड कामरान गुलाम की भी बात हो गई. थोड़ा पेसर्स पे भी आ जाते हैं. शाहनवाज दहानी के बारे में आजकल बहुत बातचीत चल रही है ट्विटर पे, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. ऑब्वियसली कोई उसकी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहा है, उसके अलावा हर चीज पे बात कर रहे हैं, बिकॉज अपेरेंटली प्लेयर्स की टेक्निकल फ्लॉज है ना, उनकी दूसरी हरकतों पे ही हम ब्लेम करते हैं. बट Dhani, I would say his Zimbabwe series was not too bad. Like काफी तमाशा मचा था when he got smashed in one of the ODIs, but other than that, his stats were pretty decent. But moving on to the emerging Asia Cup, he was completely out of sorts for the most part of that. So where do you guys think he stands? Because about a year ago, 2 years ago, he was everyone's he was a lot of people's bets to make it to the red ball setup by the time we all told Australia next, और वो वाइड बॉल में भी परफॉर्मेंसेस देता जा रहा था.
Where do you guys think it's gone all wrong for him? Abdullah bhai, let's start with you. I think not just until even 2 years ago, पिछले सितंबर तक जब एशिया कप हुआ था, तो even then he had bowled pretty well, and like people were hoping he's going to be a part of the team majorly. So I think the Shines they were middling for him. Like it was good for him to get some experience there, but he didn't really he didn't like he had his ups and downs, or it's still a work in progress, I would say. Like obviously लोग तो दूसरी चीजों पे focus करते हैं, but I prefer to focus on the bowling. And uh, in the Shines, the red ball games उसके जो Zimbabwe में हुए थे, I'm not sure if he played both or one, but he did not do well in those. उसमें उसकी bowling काफी बुरी थी, and he struggled generally. Expensive भी था, wayward भी था. And I think he was coming back from, I think that was the first cricket he had played since the PSL injury, if I remember correctly. फिर बाद में उसने वनडेज में अच्छी बॉलिंग की थी, एंड बिसाइड्स द लास्ट गेम लाइक ही वाज जनरली बॉलिंग वेल. सेम सेम चीजें हैं जो पहले भी थी, दैट आर नोटिसेबल, कि वो न्यूअर बॉल से थोड़ी बेहतर करता है, मिडल ओवर्स में बेहतर करता है, बट his defensive skills aren't very good, so that's why he struggled at times. Or especially जब high scoring last one day हुआ था जिम्बाब्वे में, उसमें obviously you need defensive skills more in such a high scoring game, so he wasn't able to fare well over there. फिर emerging cup started well for him, नेपाल के खिलाफ 5 wickets लिए, फिर उसके बाद it was all downhill. सो अभी उसने एक्चुअली एलपीएल में पहले गेम में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी. लाइक बहुत अच्छी तो नहीं, बट लाइक ही वाज यू कुड सी साइंस ऑफ हिज ओल्ड सेल्फ इन दैट ही वाज बॉलिंग हार्ड लेंथ्स प्रीटी वेल, और स्पीड भी काफी अच्छी थी. और फिर वही डेथ स्ट्रगल्स भी थे, तो द सेम पैकेज बेसिकली एज बिफोर, विच वाज हार्टनिंग टू सी कि एटलीस्ट उसकी पेस तो अभी मेंटेन थी. पहले मैच में आई थिंक ही हैड क्लॉक्ड 148 एट एंड वाज जनरली bowling around 142 on average. फिर सेकंड गेम में like this is becoming a bit of a pattern where he's unable to sustain his top level performance for a long time. तो सेकंड गेम में उसकी पेस भी थोड़ी डाउन थी, डिलीवरीज भी like not at the same intensity and everything. तो again, he's just a 24-year-old. Like I've heard so many people saying कि उसका career खत्म हो गया है, but Pakistan might be the only place in the world where 23 or 24-year-old is finished. So I think bus like just let him play and let him figure it out is all I'll say. 100%, I think with youngsters often the expectations we have on them, और सबकी linear trajectory नहीं होती यार. Like not everyone's gonna be like a Shaheen Afridi or a Naseem Shah के, वो start करेंगे like, and I wouldn't say like they'll start really strong and then they'll just keep going from strength to strength. Setbacks आते हैं कुछ कुछ bowlers की development में, and I think we need to really stay patient with that. Now, I know a lot of people, उनका issue ये होता है with Dhani, the kind of social media spotlight he's under. Now, that's not something he can control. देखो यार, like, I think we need to recognize कि players की अपनी जिंदगी है outside the sport. They're gonna have fun. They're gonna tweet. Now, if it goes viral, that's not under their control. That's up to other people जो share करेंगे and everything, right? Um, but खैर, coming back to I would actually move on to not move on yet. One more player I wanted to talk about, and this can transition into our emerging Asia Cup transition as well. But Mubassir Khan. Now, Mubassir is another one जिसने अपनी reputation ज़्यादातर red ball scene पे ही बनाई थी in the Qaeda Azam Trophy. But what we've really seen from him is उसने अपनी performances with the bat जो उसने Shines के लिए दिए in the white ball a leg of that Zimbabwe series as well as the emerging Asia Cup. Um, is this perhaps setting him up for bigger things in, let's say, the PSL coming up? Because obviously he has been with Islamabad the last 2 years, but opportunities to show what he can do with the bat have been few and far in between. So Zed, I know you've
followed Mubassir quite a bit. So what do you think of his trajectory, and क्या ये लॉन्ग टर्म में हमारे कौन कौन से फॉर्मेट्स के सेटअप में do you see him figuring in? मुझे आपने बात की ना वैसे में कि इस्लामाबाद वाली आई थिंक फॉर अ मिडिल ऑर्डर लोकल बैट्समैन जो बेसिकली रेड बॉल परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे आ रहा है पीएसएल में, तो मुझे लाइक कोई खास उम्मीदें भी नहीं थी एंड आई डोंट थिंक उसका लाइक बनता भी था कि बहुत ज्यादा चांसेस को मिलते हैं या ये वो। इस्लामाबाद वैसे भी मिडिल ऑर्डर काफी लाइक हैवी होता है, शादाब आजम फहीम वगैरह। तो रेड बॉल की बेसिकली परफॉर्मेंस से तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी कि पीएसएल में कोई खास उसको मौका मिलेगा एंड ही विल परफॉर्म। लेकिन वाइड बॉल में अगर 50 ओवर फॉर्मेट है तो उसमें लाइक उसने काफी इंप्रूव किया। इवन बिफोर वो जो जिम्बाब्वे टूर था उससे पहले भी आई थिंक उसने लाइक पाकिस्तान कप में एक सेंचुरी की थी और लाइक 102 नॉट आउट ऑफ 60 और बॉल्स। तो और उस दो सेंचुरीज की थी बल्कि पाकिस्तान कप में, और उसके अलावा एक आधी 50 भी थी आई थिंक। उसके बाद जिम्बाब्वे टूर में भी आई थिंक उसने सेंचुरी का एक कपल ऑफ 40s हियर एंड देयर। तो उसका रेड बॉल का लाइक रेड बॉल आई डोंट थिंक जिम्बाब्वे में उसने कोई खास किया था, लेकिन वाइट बॉल की उसकी लाइक ट्रांजिशन एक बेहतर हुई है। उसके अलावा इमर्जिंग एशिया कप में रिमेम्बर उसने कुछ स्टार्ट्स अच्छे लिए थे, बट कोई बहुत बड़ी कोई लाइक इवन आई डोंट थिंक उसने 50 भी आई गेस एक शायद की हो या दो की हो, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। वो आई गेस इसलिए भी हो सकती है उनके लाइक ऊपर से थोड़ा लंबा लाइक स्टार्ट मिल रहा था। कुछ इनिंग में जैसे साइम ने कुछ स्टार्ट लिए थे, ऊपर से कुछ रन हुए थे, उमेर शायद फरहान ने कुछ रन किए थे। तो आई थिंक उसके लिए ज़्यादा टफ भी होगा होगा कि वो लेट आया होगा इनिंग में, तो इस वजह से। बाकी उसकी लाइक इनिंग्स वनडे में काफी इंप्रूव हुई हैं। रेड बॉल आई थिंक उसने उतना खेला नहीं है अभी रिसेंटली काजन ट्रॉफी के बाद। लाइक दो अनऑफिशियल टेस्ट जो जिम्बाब्वे में थे बस वही खेले थे, उसमें भी वही बात आई थी कि ऊपर से हुरैरा 100 में यूसुफ और 250 कह रहा, तो वो इस वजह से उसको मौका नहीं इतना मिला। लेकिन आई थिंक इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। वो जो आप बात करें फॉर्मेट्स के, आई थिंक कि वो हफीज मलिक वाला जो एक रोल था कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान का, आई थिंक वो लाइक कर सकता है मिडिल ऑर्डर में लाइक चिप इन स्पिन बॉलिंग। या आई नो हफीज मलिक कुछ बहुत लोगों के फेवरेट नहीं रहे होंगे, लेकिन स्टिल उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था, इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी। नहीं, हफीज हफीज तक फिर भी सही है, उसके आगे जो नाम दिया ना उस पे थोड़ा आ, थोड़ी मेरी वो है, ऑब्जेक्शन है। खैर नहीं, डेफिनेट आई थिंक I would personally, obviously उसने ODIs में performances दिए, so I don't want a format mix here. मैं खुद उसके बारे में बोलता रहता हूँ क्या format mix ना करे, but I would like to see maybe one of the lesser teams in the PSL perhaps take a crack on him, you know, कि चाहे वो मेरी टीम हो ग्लैडिएटर्स जिनका मिडिल ऑर्डर खुद नॉन एग्जिस्टेंट है, कराची किंग्स हो जाए, someone like that, you know, they just take a crack with him, give him a few. Obviously, I'm not saying it's 10 की 10 games खेले वो, but maybe like a few games in that middle order and see if he can sort of grow into that role. But obviously, उससे पहले नेशनल T20 भी अभी आ रहा है, एंड एज डिस्कस्ड अर्लियर कोई 1000 टीम्स होंगी तो किसी ना किसी टीम में तो वो फिक्स हो ही जाएगा in the middle order, because I'm pretty sure national T20 भी, I have forgotten how the कायदे आजम profuse the old domestic system used to work, but उसमें national T20 में भी I think कुछ 10-12 sides होती थी ना. All right, yeah, I was right about that. um but yeah, moving on to the emerging Asia Cup, and ऑब्वियसली इसमें द फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट ज्यादातर इस बातचीत में निकला था कि सीनियर प्लेयर्स बहुत हैं इस टीम में. आई एम नॉट गोना से आई वाजंट पार्ट ऑफ इट, मुझे भी थोड़ा मसला था विद द टाइप. आई डिडंट हैव एनी इशू विद द स्क्वाड बीइंग सिलेक्टेड, बट आई डिड थिंक के एक्चुअल 11 में कुछ ज्यादा ही ऐसे प्लेयर्स को फिक्स कर दिया था जो कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है उनके. Like for example, like if we look at the batting order, there were a few games where they had both Tayyip Tahir and Kamran Ghulam playing, and Kamran Ghulam was playing at 5, which made up like उसकी कोई उधर की skill set थी नहीं as such. साहिबजादा फरहान को बहुत games मिल रही थी on at the expense of Hasibullah, जो कि I would say has the better chance of making it into the Pakistan side. But we won at the end, so that all is in hindsight. But एंड ऑल्सो कासिम अकरम को भी आई फेल्ट ही कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड अपन, जैसे उन्होंने कामरान गुलाम को 5 पे खिलाया था. आई थॉट वी वुड हैव बीन बेटर सर्व्ड कि हम कासिम को पूरा टूर्नामेंट उस पोजीशन पे 1 रन दे देते.
But obviously, I'll hand it over to you guys. Zed, starting with you, के जो utilization रही थी batting resources की, and you can even talk about the bowling, obviously. What did you think about that? Keeping the result aside, we won the whole thing, but जो Shines के टोर I feel like results काफी secondary चीज होती हैं. It's more about आप कैसा exposure दे रहे हो इन players को. बैटिंग में फील लाइक सीबी की वो जो आपने बात की ना, उसको लाइक काफी इनकंसिस्टेंट चांसेस मिले थे, और एक आध बार आई थिंक उसको लाइक कई बार, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द गेम्स ही प्लेड उसने ओपन भी नहीं किया था, विच इज जो कि उसकी बेसिकली मेन पोजीशन है। आई मीन आपने हुरैरा की भी थोड़ी पहले बात हो रही थी कि लाइक रेड बॉल डोमेस्टिक सर्किल लाइक में दो बॉल छक्के हैं, तो पाकिस्तान का भी इस तरह सीबुल्ला के आई थिंक टॉप टू टॉप थ्री रन स्कोर में था वो आखिरी दोनों एडिशन में। एंड ही वो बेसिकली इन बलोचिस्तान टीम जो कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग टीम वैसे नहीं मानी जाती, बट आई थिंक उन्होंने did it pretty well in the पाकिस्तान का। उसके अलावा आई थिंक शुरू में ना मैनेजमेंट आई थिंक लाइक वो मुबस्सिर और कासिम वाली डिबेट में थी कि लाइक वन ऑफ देम शुड प्ले, लेकिन एंड पे आई थिंक उन्होंने लाइक मे बी देर है दुरुस्त है कि उन्होंने लाइक दोनों को खिलाया, विच वो शुड बी लाइक जो ही करना चाहिए था उनको पहले से। आई थिंक उनके कामरान गुलाम की लाइक इतनी नीचे जगह नहीं बनती थी, वो जो आपने बात की। इसमें आई रिमेम्बर कि वो मोहम्मद मसूद का लाइक इंटरव्यू था पिच साइड बाउंड्री के बाद, या हनीफ मलिक का रिमेम्बर ड्यूरिंग द फाइनल, तो उन्होंने कहा था कि लाइक तैयब ताहिर को और सुफियान मुकीम को जो है वो हमने इंडिया के साथ पहली गेम में इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि हम चाहते थे लाइक नॉकआउट्स में लाइक सरप्राइज पैकेज टाइप, और उन्होंने लाइक डिलीवर किया ही वो। तो आई थिंक वो जो आप बात करें ना कि लाइक एशिया कप जीत गए, तो आई थिंक मैनेजमेंट का भी लाइक ज्यादातर वो एम होगा कि लाइक एशिया कप जीत सकते हैं हम, और इस वजह से बाकी बॉलिंग में आई फील लाइक कि मुझे लाइक शाहनवाज धानी की भी बात हो रही थी पहले, तो आई थिंक उनके बाद एक न्यू बॉल बॉलर एक शॉट था। दानी डज वेल विद न्यू बॉल, लेकिन उसकी भी मेन स्ट्रेंथ मिडल ओवर्स है। उसके अलावा वसीम जूनियर उसके साथ न्यू बॉल शेयर कर रहा था, वो लाइक न्यू बॉल बॉलर है नहीं बेसिकली, वो मिडल ओवर्स और डेथ में लाइक बेहतर करता है वसीम जूनियर। उसका जो स्लिंगी एक्शन है वो रिवर्स वगैरह उसके साथ। तो आई थिंक लाइक स्क्वाड की कॉम्पोजिशन इतना लाइक बुरी नहीं थी, बट 11 की कॉम्पोजिशन काफी बेहतर हो सकती थी इस मामले में। इवन आई थिंक कुछ एक आधी गेम में तो आई रिमेम्बर कि उन्होंने लाइक कासिम अकरम और मुबस्सिर खान से लाइक प्रॉपर लाइक बॉलर लाइक फाइव बॉलर जो थे उनमें कासिम अकरम और मुबस्सिर खान भी थे लाइक दो ऑफ स्पिन। आई डोंट थिंक मॉडर्न वाइड बॉल क्रिकेट में आप खिला सकते हो। इवन ऑफ स्पिनर का काफी अब लिमिटेड रोल हो गया है, तो लाइक स्पिनर बेहतर ऑप्शन हो सकती थी अगर आपने लाइक दोनों को खिलाना भी था, तो आप मोर एज बैटिंग ऑलराउंडर खिलाते जहाँ आप दोनों से लाइक मे बी 3 4 5 ओवर्स निकलवा सकते थे ऐसे। Before I move to Abdullah bhai, I wanted to focus. I was hoping that we could focus on जैसे अभी जैद ने I think pretty much he covered the points जिस तरह का एक 11 का composition था. But Abdullah bhai आपसे सवाल ये था कि अरशद इकबाल का because he's been someone who has had a few unfortunate runs with injury. But and at one point he was I think this was before the 2021 T20 World Cup जब उसने हमारे लिए कुछ T20s खेले भी थे. Correct me if I'm wrong. Um, is he we are heading towards the ODI World Cup now, right? And obviously all of our slots are full, but that हम हमेशा एक रिजर्व्स भी टीम लेके जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली. और उसमें पेसर का स्लॉट अभी काफी क्वेश्चन मार्क है बिकॉज दहानी ऑब्वियसली इज नॉट इन गुड टच. And that leaves, I think Hasnain is also facing a few injuries. So that doesn't really leave us with much apart from maybe if you go with an experienced option, you have Hassan Ali. But do you think Arshad ने जिस तरह की ये performances दी हैं इस tournament में, do you think he's someone who could make a late claim on that spot? Because obviously, like your reserve pacer is essentially just there for cover at the end of the day. Like you're not expecting him to play most of the matches in the ideal scenario. Since you asked about Arshad, I just wanted to cover the like all the other pace options क्योंकि दहानी की तो बात हो गई है like वो जो जिम्बाब्वे का टूर था उसमें मोहम्मद अली also I thought bowled well and I think that if we were to need a third pacer in test he should be around, he should remain in contention because obviously options कम ही हैं. And I think that the type of situation that he was thrown into against the mighty baseball was perhaps a bit harsh on him, and he shouldn't be judged on the basis of that debut series.
So besides that, Amir Jamal had a very good Zimbabwe tour, and he got ended up getting selected for the test team as well. उसके भी थोड़े मसले मसाइल हैं in that he has problems with maintaining consistency in his action and stuff. उसकी जैसे अभी LPL में एक दो गेम्स खेले हैं वो उसमें extras बहुत ज़्यादा दे रहा था, तो he struggles with the consistency, but once he gets the hang of things then he becomes a better bowler. But all of these are like a work in progress, and I think Arshad bowled really well in the emerging Asia Cup. Like, it was great to see him back in action after a long time. उसने न्यू बॉल से मेरे ख्याल में स्पेशली अच्छी बॉलिंग की थी. लाइक पहले जब उसने जितना हम लोगों ने उसकी बॉलिंग देखी है वो थोड़ा हिट द डेक टाइप बॉलर है जो थोड़ा बैक ऑफ लेंथ करता है, बट हियर ही वाज न्यू बॉल के साथ वो थोड़ा पिच अप भी कर रहा था, अच्छी स्विंग भी कर रहा था. And I think that that's something that the recent fast bowling camps he did this year have helped him. So all of these, like Amir Jamal, Arshad Iqbal, all of these guys, if we consider that Hasnain might not be fully fit, Dahani is having form issues, Ehsanullah is injured again. So all of these guys are like options, but they all have the ups and downs, and I think it's eventually going to come down to what squad role the management feels that they need to fill. If they feel like if they feel it's absolutely compulsory that the fifth bowler is someone who is whose priority is bowling good lengths and bowling well with the new ball, then I think Arshad will definitely be an option. And if not, if they want another like old ball type bowler, even though they have Wasim Junior, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं कि शाहीन नसीम रऊफ तीनों all phase bowlers हो सकते हैं. तो in that case, if you're willing to compromise and if you're willing to accept another old ball style bowler, then the likes of Amir Jamal or whoever else is available and fit, like even Hassan Ali at this point, I think he's one of the only few available options left now. So मुझे तो clear contender as such नहीं दिख रहा है, and I think it'll be a pretty difficult decision. वही होगा कि स्क्वाड अनाउंस हो जाएगी, उसमें एक रिजर्व ये होगा, which which most people won't have been expecting, and then there will be an outrage over that one reserve pick. तो बस उसका इंतजार करते हैं. एंड आई मीन कंसिडरिंग के हमारे जो चार पेसर्स हैं, ऑब्वियसली इनको नजर लगाने का कोई इरादा नहीं है, बट दे आर generally quite fit. So I don't think they'll be that concerned. So what I want to happen is कि Arshad जाए, obviously, because he provides the more quality cover. But I think what will end up happening is they'll probably just lean towards Hassan in the sense that, ODI World Cup hai, he's an experienced head, good presence in the dressing room, etc. Um, so that's probably what might end up happening. But obviously we can never know until, as Abdullah bhai said, कि कोई left field selection हो सकता है. I still remember 2015 में जब हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मैं तो क्रिक इन्फो पे बैठ के लाइक आधे नाम सर्च अप कर रहा था कि भाई ये कौन आ गया स्क्वाड के अंदर, ये कौन आ गया स्क्वाड के अंदर. Especially in the pace attacks, I was like, I don't even know what's going on here. Um, but yeah, that was I think uh, before, like, we'll probably transition to a short bit about the top end series after this. But how did you guys find Mohammad Haris's keeping and captaincy? Because obviously this was, I think, the first time he's captained a side at this level. Um, so I personally thought, obviously, he did seem a bit flustered at certain points, but that's to be expected. Not easy to be captaining on such a stage, like when you've never done it before. But I think he did grow into the role quite a bit towards the end. Zed, start with you. हाँ आई थिंक लाइक मोहम्मद अरसी कैप्टनसी काफी अच्छी रही थी, एक्सेप्ट मे बी फॉर द लाइक 11 कॉम्पोजिशन पार्ट. उसके अलावा काफी अच्छी कैप्टनसी थी. मुझे याद है मैं भी उसका पॉडकास्ट जो रिसेंटली है मैं सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहा था कि लाइक एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए लाइक he basically went on to dinner with every प्लेयर अलोन. लाइक हर प्लेयर का बार बार एक डिनर पे गया.
तो इस तरह की चीजें आई थिंक लाइक अच्छी हैं कि वो एक उसको लाइक क्रिकेटिंग सेंस उसकी काफी अच्छी है। और उसकी लाइक फील्ड चेंजेस तो आई डोंट नो लाइक बट आई थिंक लाइक फील्ड चेंजेस की अच्छी थी। उसके अलावा बॉलिंग में आई डोंट थिंक उसका लाइक न्यू बॉल के साथ आप कह सकते हैं टीम थोड़ी शॉर्ट थी उसमें। आई डोंट थिंक उसका कोई खास आप ब्लेम कर सकते हैं। बट उसकी कीपिंग वगैरह भी अच्छी थी। इवन दो लाइक मोस्ट ऑफ हिज कैरियर वो अक्सर जो कीपिंग नहीं करता फील्डिंग करनी पड़ जाती है उसको। रिजवान हो गया किसी और वजह से। अंडर 19 में भी रोहेल नजीब जो है सो कीपिंग नहीं कर सका था इतनी। तो कीपिंग भी उसके लाइक बेहतर काफी अच्छी थी। और उसके अलावा बैटिंग में आई उसने कोई कोई खास रन नहीं किए। विच आई गेस मे बी कैप्टनसी प्रेशर है या कुछ भी हो सकता है। सो आई एक इनिंग्स आई रिमेम्बर ने 150 की थी अच्छी लाइक अच्छे रन रेट पे भी। तो उसके अलावा आई थिंक इसकी लाइक बैटिंग थोड़ी अच्छी नहीं भी रही है। बैट इमर्जिंग एशिया का उसका अच्छा नहीं रहा बैटिंग के लिहाज से। लेकिन वैसे आई थिंक उसकी कीपिंग या कैप्टनसी प्रीटी गुड। I think there were like some positives and negatives with both things. I think his captaincy, in terms of his leadership, like you can tell he has a persona that he understands what he needs to do to be a good leader, but maybe he's not exactly there, which is understandable considering his age and lack of experience with captaincy. I checked yesterday, and at the highest level, I think he's captain in one first class game besides this emerging cup. Besides that, I don't think, not at the top level, obviously, lower levels पे उसने captaincy की होगी under 19 वगैरह पे, but at the top level, that's pretty much it. So he has a lot to learn in that sense. And keeping की जहाँ तक बात है, like he's good, but there were some lapses. Like I think शायद इंडिया वाला मैच था पहला जो हारे थे, उसमें मेहरान मुमताज की बॉलिंग पे एक कैच मिस हुआ था, एक स्टंपिंग मिस हुई थी उससे. So there were a few lapses, but like again, a young keeper है तो if anyone is expecting him to be on Mohammad Rizwan's level, then you're going to be disappointed because he isn't there. But I still think like he's someone that you can tell is going to have the work ethic to keep improving further. So it's not something I'm particularly concerned about. उसकी बैटिंग आई थिंक एक दो फिफ्टीज थी, वैसे तो कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी. ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू पुट ऑन टू मेक some good scores, but he ended up throwing it away after a couple of starts maybe. तो वो बात है that in the especially 50 over cricket, like you cannot give him too much responsibility at this point, even if he like most likely will go to the World Cup as a backup wicket-keeper batsman. You can't like consider him a like for like a replacement for Rizwan in that sense. You cannot. He has to bat at number 6 or 7, probably 7 if he comes into the lineup with Shada batting higher than him, because you would rather that वो थोड़ा अपना natural game खेले rather than trying to do something which he is not familiar with. उसका in fact list A भी अभी तक mostly career 6 and 7 पे गया है. In this tournament वो थोड़ा अपने आप को promote कर रहा था, कह रहा था कि मैं responsibility लूँ वगैरह. So he came in at 4 and 5 a few times, but like that's not really his forte at the moment. And I think that again comes down to the experience part, right? कि इनको ज्यादा लिस्ट exposure मिलता भी like बहुत minimal है, especially since Haris has started like actively touring with the team over the last year or two. So I think obviously this is another point where the more he plays, he's just gonna get better at that. Where I think he really struggles now is like having that patience to build his innings out. He does have it in him to have that flamboyance, which obviously we are all happy to see कि एक young Pakistani batter है जो risks लेने के लिए तैयार है. But obviously ODIs is a bit different in that sense, and I'm sure he will grow into it eventually. Um, we are coming up on time, but just before we do end it, I guess I did want to go into the top end thing a bit more in depth, but since we have a bit less time on hand, if you guys could just give like your few basic takeaways from it, what players impressed, and if you think any of these are obviously since this was a T20 tournament, who do you see perhaps getting opportunities in the PSL heading into next year? I think
there were a few interesting performances like Chavez की batting बहुत अच्छी थी. He has demonstrated so far in like all of his batting so far that among all the talent at the lower age levels, he's probably the one with the best skill set and ability for T20 cricket at least. क्योंकि वो थोड़ा उसके पास power भी है क्योंकि he's not like the typical under 19 Pakistani cricketer, which is a little बहुत ज़्यादा lean and thin and like most of them that come along are like that. He has a bit more weight and muscle on, तो उसकी वजह से थोड़ा natural power भी है. And it was interesting to see his overall game कि वो improvise भी अच्छा कर लेता है. He hits around the ground. एक्स्ट्रा कवर पे भी मार लेता है, बिहाइंड द विकेट पे भी मार लेता है, शॉर्ट बॉलिंग को भी थोड़ा बहुत हैंडल कर सकता है. तो दैट वाज रियली इनकरेजिंग टू सी. शामिल हुसैन हैड आई थिंक वन और टू गुड इनिंग्स एंड वो उसकी he is a player who I think I don't know what level of T20 player he will be, but I think he will be a good player generally. So uski development, it should be interesting to follow. Besides that, Arafat Minhas had, from an all-round perspective, like he had a couple of first ball ducks, but in the final he made a fighting 41. Or wicket taking में वो बहुत अच्छा था. Like he was the strike bowler essentially for Royal, the captain throughout the tour. And Ali Asfan bowled really well. Uh, I think uski just style of bowling है, it's more suited to red ball cricket, but he really adjusted it well, and it also helped that the pitches were a bit uh, un-Australian, if anything, के इतने 15-16 overs finger spin के करवा रहे हैं एक मैच में. Not finger spin, but spin. Other things, Arafat Minhas की fielding was really good, especially his ground fielding and catching was really good. Final में I think उसने एक कैच छोड़ा था, but besides that he did really well, especially with catching and ground fielding. And then last but not the least, someone who is at risk at being called the middle order Imran, but Irfan Niazi, who had five catches and six catches and three runouts on the tour, but not many runs to show for it. But he is an incredible athlete, and I would go as far as to say like one of the top fielders in the world generally. He has an incredible arm. He's very agile and takes catches out of nowhere, and his ground fielding is amazing. I just wish कि वो थोड़ा runs भी कर लेता. It's a pretty good summary, Zed. pretty much what Abdullah भाई said, लेकिन आई थिंक इन सब में से जो अर्लीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई पीएसएल खेलेगा वो अराफात मिनास होगा. तो उसको लाइक मुल्तान सुल्तान ने पहले एक सेंचुरी कैरी भी किया है. उसके अलावा उसकी आई थिंक प्रीटी मच एवरीवेयर ही प्लेड उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है. बांग्लादेश के खिलाफ भी अंडर 19 में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी. पीजीएल में भी आई थिंक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइप कुछ था. उसके अलावा अभी भी उसके लिए परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी नहीं थी. बैटिंग के साथ लाइक ठीक था, लेकिन बॉलिंग उसकी बहुत अच्छी थी. अली असफन भी आई थिंक लाइक बेसिकली जुल्फिकार बाबर टाइप बॉलर है. वो लाइक काफी अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, रेड बॉल सूटेड बॉलर है. तो मे बी अ लॉन्ग टाइम रिप्लेसमेंट नोमान अली की, आई डोंट नो. उसके अलावा शावेज इरफान की बैटिंग तो बहुत अच्छी थी. आई होप के लाहौर के लिए उसको कोई गेम दे देते मे बी इंस्टेड ऑफ ताहिर बेग, लेकिन उन्होंने लाइक ताहिर बेग को ज्यादा लंबा रन दिया. देयर चॉइस, आई मीन. रोहेल जी आई थिंक उसका लाइक बेहतर थोड़ा कम बैक हुआ. उसकी T20 की तो फॉर्म बहुत अच्छी नहीं जा रही थी अरसे से. बेसिकली उसकी T20 फॉर्म की बहुत अच्छी नहीं थी. इसमें आई थिंक थोड़ा बेहतर उसने किया. आई मीन काफी और चेंज होगा उसके लिए कि वो एशिया कप में रिजर्व में था और उसके कुछ महीने बाद लाइक कुछ महीने भी नहीं, आई थिंक महीना डेढ़ हुआ होगा मैक्सिमम, और वो शाहीन का कैप्टन था. तो उसका आई थिंक लाइक उसका भी लॉन्गर फॉर्मेट में ज्यादा उसका चांस है. रोहिल जी का वो भी खैर अब मुश्किल हो गए होंगे. हसीबुल्ला और सरफराज भी आई डोंट नो कब तक है. और उसके हसीबुल्ला खान का भी काफी लाइक अच्छा स्टार्ट रहा है डोमेस्टिक में. कुछ यही थे, उसके अलावा ज्यादा कोई
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे बहुत हुई थी। फैसल अकरम का आई थिंक सुफियान मुकीम भी अब आ गया, तो उसका इंटरेस्टिंग होगा कि कौन लाइक ज़्यादा जल्दी पहुंचते हैं नेशनल टीम में। सुफियान मुकीम ने भी अच्छा किया था इमर्जिंग एशिया कप में, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। हाँ नहीं, फॉर श्योर। एंड आई थिंक शावेज, आई थॉट कि जैद स्पेशली बोलेगा शावेज ने अगले सीजन एलक्यू के लिए खेलना है, which I personally think होगा. I think he's going to be their emerging guy for next season. Um, but yeah, that was pretty much it from the Shaheens. I think काफी अच्छा डिस्कशन रहा है, and I hope जो listeners हैं उनको थोड़ा एक insight मिल गया होगा as to how the Shaheens are have performed over the last few months, and we hope that there's more tours in the future के ताकि हम ये और regularly कर सकें. Thank you so much, Zaid and Abdullah bhai. And I will catch all of you again on the next episode. Take care and bye.